हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाइंडसाइट निफ्टी चैनल। विक्रम दिस साइड। तो चलिए हम आज के रीजनेबल ट्रेड्स देख लेते हैं, हमें कहाँ पे एंट्री लेनी थी और ट्रेड को कैसे मैनेज करना था। तो अभी हम देख सकते हैं कि मार्केट ईएमए के नीचे है। जब भी मार्केट 200 ईएमए के नीचे है, एक्चुअली ये 5 मिनट्स का ईएमए है, 20 ईएमए है, एंड दैट आई प्रोजेक्टेड ऑन 1 आवर चार्ट। सो 220 इज अप्रोक्सीमेट. I use only 2 EMAs, 20 EMA and 220 EMA. So 1 EMA is more than sufficient. You do not need to project many EMAs. Some people are using 5 EMA, 7 EMA and then 12 EMA. So you do not need those many EMAs. 1 EMA is more than enough. Don't try to project so many indicators on the chart. It will mess up everything. Anyways, so there is a gap down, and after the gap down, if high 1 or high 2 gets triggered after 2 consecutive bull bars, then I would buy. As you can see, there is first candle and there is a wick on the candle, so I would not buy here. And even if the follow up is bad, so if there are two consecutive candles, then there is a possibility that that day would be either trading range day or bull day. As you can see, follow-ups are bad, so we have to wait until some pattern gets developed. There has to be some wedge or double top. That pattern we can use for the entry. If there is no such pattern, then there will be volatility and market would be in the trading range. So I can, there are 3 pushes, so I can draw a triangle here. And first breakout of triangle, there is 50% chance that first breakout of triangle would fail and it would reverse. First target is low of the triangle. If it fails, then first target would be apex of the triangle and then high of the triangle. So we have to manage the trade accordingly. Now there is a breakout and a decent follow bar. We see then after the entry bar, so this bar is entry bar for us, and that bar is closed at its low. Next follow bar is bad, and as we can see, it is creating a wedge pattern. So it's a bull flag. So there are 70% chance that this will have bull breakout, but we can see there are out of 4 bars, there is only 1 bull bar, and that is 2 a doji bar. So that's the reason any reversal up can be minor. And if this is a bear trend, after the reversal it should take resistance from this breakout point. After breakout, this is a channel phase. So if it is breaking downside, then you do not need to wait until the low of this candle is broken. You can enter when this bar is getting formed. So this is breakout point for us. See, we always have to focus on the breakout points. The reason is that's the way we can maximize our profit and we can ride the trend. Otherwise, see,
to write the trend, we should be able to understand what all the breakout points, and even if market gets reversed, then what should be our exit condition. So if you buy here, if you sell here, so selling means buying a put, then this is big climax bar, bad follow up bar, and you can see market is going in trading range, so you can exit somewhere down here. Then there is a wedge, and this is again triangle pattern, but there is no decent buy signal bar. See, when market is in strong trend, first EMA touch bears, if market is in bear trend and strong bear trend, then first EMA touch bears will sell. They will even sell first bar, which if there is a first bar or gap bar above EMA, and that's the reason you can see there are some strong bear bars, because as soon as these bars are formed, they sold. See, if you buy put here, there is no need to exit here. If market is in strong trend, then even after reversal, it might take resistance from high of this bar. So high of the previous bar, then channel high, these can act as resistance. So this is strong bear bar, we can sell here because that bar is coming from EMA, and that bar is also broken the low of this bar. So some of the bulls who have bought here, now after the breakout to new high, so they would have put their stop loss here. So this stop loss got hit. So while this bar is forming, we can sell here. See, now how can we ride this trend? Since follow up is bad, we might think that after two consecutive bull bars, bear bars, and this is inside bar, that too at low of the trading range, so we should exit. So if you are buying put here, then we always have to use reasonable stop. There are two stops possible here. So the reasonable stop is above the trading range. It may happen that there will be a reversal, and it will take resistance from this 20 EMA, or it might create a lower high, and then there will be sell off. So that's the reason using the correct stop is very important. If you are using the tight stop, then that tight stop we call as Kung stops. So there is 90% chance that your stop loss will get hit. So that's the reason we should use the reasonable stop. Now there is a sell off. After sell off, you say this is strong bar, so anyways I'll sell here even if it is in 50% range. So if this is a tight trading range, then there will be buyers here at the low. So this is limit order market, so there will be some buyers here and then sellers above the sellers here. So you can sell here and see the follow up candles. If you see there is a reversal or strong bull bar, then you can exit above that bull bar. So this is not exit condition for us. So if this, there are actually multiple ways to enter this this trade. So if market is selling off, so we can enter somewhere down here, but there are 4 consecutive bull bars, so that's the reason we may hesitate to buy or sell here. So
See, when there are 4 or more consecutive bars, there is a chance that this reversal would be minor and then one more leg up. So that's the reason we always have to look for the micro double top. And if at all we have to sell, then we need a decent or small sell signal bar, so that our stop loss would be small. Anyways, let's say I bought put here. Now we know that there is a breakout, and this is the breakout point. So if there is a strong trend, then market should take resistance from here. If there is a weak trend, then market might transition into the trading range, and before that it can take resistance from here. So my exit condition is this now after the new breakout and bad follow up. Then there is a next strong breakout, and you can see there is a gap. So these are the characteristics of the small pullback trend. Then there are 2 consecutive bear bars, and second one is strong bear bar. So market is in a bear trend for 20 or more bars. There is tight trading range. This tight trading range can act as a final flag and magnet. So that's the reason it usually tests the low of the trading range. There is a strong bear bar, and this can attract profit takers. And if there is a decent buy signal bar, then we might test high of this bar. So see, these are the odds. Okay, so on next bar or on few within the few bars, we might test high of this bar. But if we are buying here, then we also have to check the follow up candles. We should always remember that, or rather I will always remember that next there can be a bad follow up on next bar. Here this bar itself would form as a bear bar, and then next bar would break the low of that bar. If it happens, then I'll exit immediately. Then our entry bar might be a decent buy signal bar, but next bar can be a bear bar, and then the next bar might trigger that low of that bar. So there are multiple possibilities. I would also exit in that case. There are no consecutive bull bars. And this is third scenario where the next bar would be a strong bear bar, and even it is going below the entry point. So if it happens, then I will try to exit at break even. See, so there are some odds that after these 2 consecutive bars, if there is bull inside bar, then there might be a brief leg down before the reversal. So here this is the decent buy signal bar. Even if you are buying here, then you have to use the last stop, or they just project these 2 consecutive bear bars below, and then use that stop. And if you don't want to use that stop, then exit during the reversal. There are countless ways to manage the trade. Using the large stop and then scaling in, only expert can do, or once you become an expert, you will be able to do that. Alright, so you can see after new breakout there is channel phase, and after channel phase there will be a trading range, and there is a decent buy signal bar. So first target is high of the channel. Okay, now so we were talking about the characteristics of the strong trend. So there will be a gaps. Now you can see what is difference between this trend and this trend. See, this trend, if I can see, this is in the trading range, and there is first push, then pullback, and then second push.
So it looks like two leg pullbacks, or there are two legs in the trading range, and second leg is strong, which is bivacuum test of the high of the trading range. So now here you can see there are 4 consecutive bull bars, and there is only small bear bar. See, in these 4 bull bars, the length or body of these bull bars are increasing. Here it is decreasing, and there is a bear bar, only one bear bar, and we can see here there are multiple bear bars. So this shows that this trend is strong. Any reversal can be minor. See, these are the odds. That doesn't mean that this is going to happen. We have to see the price action and manage the trade accordingly. Now this is the target. The bears after the new low, see, they change the way they are trading. If it is in breakout, then they will sell and hold, and if it is in the channel, then as soon as new low gets created, they would take profits, and that's the reason we see bull bars here. Now after the market, let's say after the market breakouts to new low, then they would use stop loss above this bar. So the stop loss would be here. If the market is breaking upside, then we can, this is in a micro channel and it is breaking to the upside, and this is the reasonable stop position, so we can buy here, we can buy a call. And as you can see, it is in tight channel. This first pullback bought, bulls bought, and there is strong bull bar. So this is one target for us. We can book 50% quantity here, or we can hold on the stops. This is breakout point. See, every new bar, if there are gaps, we can see that as a breakout point. If there is a reversal, market might take support here, as well, or market can test breakout point, and then it would reverse and try to create lower high or double top, or it might take support from 20 EMA. So there are multiple possibilities, and we have to think each and every possibility. See, making money in stock market is not easy. Many people say it's easy, but it is not. If you have to make consistently money, then you have to do a lot of work. And that's the reason, even if someone say making money in stock market is easy, and if you look at the SEBI's data, then it shows that 89% people are losing money in the stock market, and there are only 1% people are making more money than EFTs. And there are some exceptional traders who can make, if you give them 1 or 2 lakhs, they will make many CRs in a few years. So it depends. If you want to develop those skills, and if you want to do it for a living, then you have to do a lot of work. If you are using just strategies like 5-minute candle or 10 minutes candles, if the market breaks 5 minutes candles low or high, and then you are going to buy put or call, these strategies will not work in long time. Anyways, I can keep talking about it for a long time. So this is one reasonable entry. When the market is breaking downside, we can sell here. So first entry, then second entry, third, then fourth, then fifth.
if the market is breaking to the upside. So these are the 5 entries which are reasonable. Now can I sell here? Can I buy here? Say this is not decent buy signal bar, so I would not buy. All right, now we'll look at options chart. Bank Nifty 45,300 PE. See, this is not strong buy signal bar. If strong buying is happening, then this bar would have closed at its high, and that's the reason we have to always look at option chart. Now you can see there is bad follow up. Okay, so this is bull bar. Now we are looking at P chart, then this should be a strong bear bar, but there is a bull bar. It shows that in the option there is a lot of momentum and positive changes in PE, which indicates that there are more sellers, or people are interested in selling than buying. Now this is decent buy signal bar. Say even if we buy here, we have to look at follow-up candles. There is no strong momentum, but we can see for all these 3 bars, none of the bar has broken the low of the previous bar, and which indicates that there is movement in the option in PE. So market might break down to the downside. These are the odds. If low of this bar gets triggered somewhere down here, let's say, if so, this might act as a support, and if this low is broken, then I would exit. So I can buy here, put, and then wait and see what happens. You can see there is a strong momentum up, and then there is a bad follow up. So as soon as this bar is closed, then I can book 50% profit here, and then I can hold remaining quantity. Bad follow up, but there are no strong bear bars, so I can wait here, and you can see there is next strong bull bar and then bad follow up. So 150 to 365, so more than 100% profit you would have got as per your quantities. Now market is going sideways, you can see here. Now we'll see 45,000 CE Bank Nifty. Look at the chart, there are strong bear bars. We don't see one single reasonable buy signal bar. See, this is doji bar, I would not buy here, and even if I buy, then I would exit somewhere down here. There is bad follow. Okay, then I'll check 44,700 CE. So this is reasonable buy signal bar. If I buy here, then I can hold throughout this rally.
So here also you would get 100% profit. This is first target. Second target, this 50% profit, you can book 50% quantity here, and then you can hold the remaining quantity. And you can sell remaining quantity here after this strong bull bar. See, there are some surprises, like look at the body of this bar and option chart. So if you compare these two bars, then body of this bar should be greater than the body of this bar. Sometimes what happens, this is strong breakout, and as we discussed, this is the entry bar. Now market is breaking to the upside, so there would be many stop loss here, and that's the reason suddenly there will be a give up bar, and there is a momentum in the options price. So as soon as the high of this bar is broken, you can see there is a great momentum in the option. So that's all we have in Nifty Bank. Now we'll see Nifty 50. तो ये निफ्टी 50 का चार्ट है. आप देख सकते हो कि गैप डाउन होता है, फिर एक इनसाइड बार बनता है, तो इसके नीचे हम सेल कर सकते हैं, पर हमें ये देखना है कि ऑप्शन के चार्ट पे कैसे मोमेंटम है. अगर ऑप्शन के चार्ट पे मोमेंटम दिखते हैं तभी हम इसे सेल कर सकते हैं, नहीं तो हम वेट करेंगे. उसके बाद देखिए कि देखिए हमें गैप को ना हमेशा एक बियर या बुल बार की तरह देखना है. गैप अप होता है तो बुल बार, गैप डाउन होता है तो बियर बार. तो एक कल की ट्रेडिंग रेंज थी हमारे लिए, ये ट्रेडिंग रेंज का लो है. तो अगर हम इसे प्रोजेक्ट करते हैं नीचे, तो ये हमारे लिए मेजर मूव टारगेट होता है. यहाँ पे कुछ बायर्स आ सकते हैं, तो आप देख लो कि एग्जैक्टली वहाँ पे हमें बाइंग दिख रही है. पर जबकि ट्रेडिंग रेंज का ब्रेकआउट हो चुका है, तो ऐसा भी हो सकता है कि ब्रेकआउट के बाद फिर से मार्केट चैनल में जाए, फिर ट्रेडिंग रेंज बनाए. तो ब्रेकआउट, चैनल और फिर ट्रेडिंग रेंज. अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है तो यहाँ से रेजिस्टेंस ले सकता है, या तो ये जो ब्रेकआउट पॉइंट है वहाँ से रेजिस्टेंस ले सकता है, क्योंकि ये न्यू लो है. तो हमें यहाँ पे वेट करना है. तो अगर हम यहाँ पे सेल करते हैं तो हमें देखना है कि फॉलोअप कैंडल्स कैसे बन रहे हैं. इनसाइड बार बन रहा है, इसका अगर हाई निकलता तो इमीडिएटली मैं एग्जिट कर जाता, नहीं तो हम वेट कर सकते हैं. उसके बाद आप देख लीजिए कि देखिए इसे देखने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं. एक तरीका ये हो सकता है कि हम इसे एज ए चैनल की तरह देखें. दूसरा तरीका ये हो सकता है कि यहाँ पे हायर लो बनाए, तो यहाँ पे चांसेस ये भी है कि यहाँ से फिर से मार्केट रैली करे और फिर से कोई नया हाई बनाए. तो ये सब पॉसिबिलिटीज़ को हमें हमेशा ही ध्यान में रखना है. और अगर स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है तो जैसा मैंने कहा कि यहाँ से मार्केट को रेजिस्टेंस लेना चाहिए. तो ये सब पॉसिबिलिटीज़ है. तो हायर लो बनाए तो चांसेस ये भी हो सकते हैं कि मार्केट यहाँ से हायर लो बनाते जाए. तो ये हमारे लिए एक ब्रेकआउट पॉइंट था. देखिए बहुत आपको ट्रेडिंग के लिए बहुत काम करना है, बस 2-4 लाइन ड्रॉ करके सपोर्ट रेजिस्टेंस करके आप कुछ कर नहीं सकते हो. एनीवेज, तो नया ब्रेकआउट है, फिर यहाँ से न्यू ब्रेकआउट हो रहा है. ये हमारे लिए वेज का काम कर सकता है. यहाँ पे पोटेंशियल एक, अगर मान लीजिए यहाँ पे बुल बार बनता तो चांस ये है कि ये इसका हाई टेस्ट करता, पर वैसा नहीं है. यहाँ पे थोड़ा सेल करना रिस्की है, पर अगर सेल भी करते हो तो आपको फॉलोअप कैंडल्स देखना है.
कोई भी अगर कैंडल उसका हाई निकल रहा है, डिसेंट बाय सिग्नल बार बन रहा है, तो आप एग्जिट कर सकते हो। जैसा मैंने बताया, चांस ये है कि ये चैनल का हाई टेस्ट करें, तो यहाँ पे फिर नीचे जैसे ब्रेकआउट हो रहा है, आप यहाँ पे फिर से सेल कर सकते हो। तो एक रीज़नेबल सेल है, क्योंकि ये बुल फ्लैग था, इसका बुल ब्रेकआउट होना चाहिए था, पर बियर ब्रेकआउट हो रहा है। तो यहाँ पे बियर ब्रेकआउट हो रहा है। स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट के बाद जैसे चांस है कि ये हाई तक टेस्ट करें, अगर स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है तो मार्केट कंटिन्यूसली नीचे जा सकता है, वैसे ही होता है। और यहाँ पे फिर स्ट्रॉन्ग बुल बार के बाद, स्ट्रॉन्ग बियर बार के बाद एक डिसेंट बाय सिग्नल बार एक डोजी बार बनता है। तो यहाँ पे हम बाई तो नहीं कर सकते, पर यहाँ पे इसके ऊपर आप एग्जिट ज़रूर कर सकते हो 50% क्वांटिटी, रिमेनिंग होल्ड करके आप देख सकते हो। बैड फॉलोअप है तो यहाँ पे कहीं पे आप एग्जिट कर सकते हो। फिर यहाँ पे फर्स्ट EMA टच है, वो हमें पता है कि सेल होने के चांसेस है। ट्रेडिंग रेंज है, ट्रेडिंग रेंज का हाई है, तो ऐसे ये बार फॉर्म हो रहा है, हम यहाँ पे सेल भी कर सकते हैं। यहाँ पे भले 4 कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स है, पर जैसे बार फॉर्म हो रहा है यहाँ तक आ रहा है, हम यहाँ पे कहीं पे सेल कर सकते हैं या इसके नीचे। क्योंकि चांसेस ये है कि ये फॉलोअप कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है, यहाँ पे कोई कॉन्जिक्यूटिव बिग बुल बार्स नहीं है जो कि हाई पे क्लोज हो रहे हैं। मुझे लगता है निफ्टी में वैसा था। देखिए निफ्टी का ये अगर हम चार्ट देखते हैं तो यहाँ पे एक डिसेंट बाय सिग्नल बार्स हैं और देर आर मेनी, तो यहाँ पे थोड़ा रिस्क ज़्यादा थी। देखिए हमें करंट प्राइस एक्शन चार्ट पे देख के ट्रेड करना है, ये नहीं देखना है कि निफ्टी ऊपर जा रहा है तो बैंक निफ्टी में कॉल बाय कर लो, निफ्टी नीचे जा रहा है तो बैंक निफ्टी में पुट बाय कर लो। ऐसा लॉजिक कोई काम के नहीं है और सस्टेनेबल भी नहीं है। एनीवेज, तो मार्केट यहाँ तक आता है। अगर ये पैटर्न फेल होना होता तो कैसे फेल होता? फेलियर पैटर्न समझना बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो ये कि यहाँ पे कोई डिसेंट बाय सिग्नल बार बनता, या फिर ऐसा बाय सिग्नल बार बनता कि सडनली इसको सबको रिवर्स कर देता। ऐसे बार के लिए भी हमको रेडी रहना है। दूसरा ये हो सकता था कि मार्केट यहाँ से रैली करता, EMA से फिर यहाँ से रेजिस्टेंस लेता और मार्केट फिर नीचे जाता। तो इसलिए स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा यूज़ करना हमें ज़रूरी है, या फिर ट्रेडिंग रेंज ब्रेक होने तक हमें वेट करना है। अगर हमें हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड चाहिए तो हम ये बार के नीचे फिर सेल कर सकते हैं, क्योंकि ये हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड है। जैसे ही एक बार बनता है, अगर वो डिसेंट बाय सिग्नल बार है तो चांस ये है कि कोई नया लो क्रिएट हो, उसके बाद फिर इमीडिएटली बुल बार बने, फिर हमें वहाँ पे ब्रेकआउट पॉइंट देख के हम ट्रेड कर सकते हैं। तो मार्केट यहाँ तक आता है, उसके बाद फिर जैसे यहाँ से मार्केट ब्रेक होने लगता है। देखिए ये पैटर्न में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों पैटर्न ऑलमोस्ट सेम है। हाँ, मुझे थोड़ी देर ऐसा लगा था कि मैं निफ्टी बैंक ही देख रहा हूँ, ये पैटर्न देख के देयर इज़ नो डिफरेंस एज सच। ऑप्शन में भी हम मोमेंटम देखेंगे, यहाँ पे बहुत लगे स्टॉप लॉस होंगे, तो देखते हैं कि यहाँ पे कैसे मोमेंटम होता है। इनसाइड बार है, यहाँ पे भी हम बाय कर सकते हैं। तो हम देखिए, अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है तो क्या हो सकता है। अगर हम यहाँ की प्राइस एक्शन देखते हैं ना, तो मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस ले सकता है, जबकि एक बार में उसने लिया भी है। नेक्स्ट इसको हम इसके ऊपर ज़रूर बाय कर सकते हैं। अभी चांस ये है कि मार्केट यहाँ तक जाए, कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स हैं, तो हम यहाँ पे आराम से होल्ड कर सकते हैं ये टारगेट के लिए। यहाँ पे हमारा एग्जिट ये बार के नीचे ही बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी डिसेंट सेल सिग्नल बार नहीं बना है। अभी हम ऑप्शन का चार्ट देख लेते हैं। देखिए इसीलिए लोग कहते हैं ना, मैं एक दिन में 500 चार्ट देखता था, या देखिए वो पॉसिबल नहीं है। 500 चार्ट देख के आप कुछ नहीं सीखोगे, आपको 1 या 2 चार्ट की ही ज़रूरत है, इतने सारे चार्ट देखने की ज़रूरत नहीं है। एक ही चार्ट को आप ध्यान से देखोगे, समझने की कोशिश करोगे तो आप समझ जाओगे, वरना 500 चार्ट देख के भी आप इंट्राडे भी ट्रेड नहीं कर पाओगे, तो इसका कोई यूज़ नहीं है। इसलिए आपको ये समझना है कि आपको एफर्ट्स कहाँ पे देना है। एनीवेज, सो निफ्टी 900 ओके 19700 का पी देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए मोमेंटम, देखिए ऐसे मोमेंटम है ना, तो फिर आप विदाउट एनी हेजिटेशन आप बाय कर सकते हो, पुट बाय कर सकते हो। मार्केट इसके ऊपर जा रहा है, हम बाय कर सकते हैं।
हमें बस देखना है कि जैसे फॉलोअप है क्या बार भी वैसे बन रहे हैं, अगर बन रहे हैं तो ठीक है, मार्केट बैलेंस में है। तो देखिए अभी मार्केट शुरू हुआ है। एक्चुअली मैं नेक्स्ट डे वीडियो बना रहा हूँ, कल मुझे टाइम नहीं मिला इसको बनाने का। तो हम इसको आराम से होल्ड कर सकते हैं, फॉलोअप कैंडल्स देखना है, फिर जैसे यहाँ पे एक डिसेंट सेल सिग्नल बार बनता है, इसके नीचे हम एग्जिट कर सकते हैं। तो 94 टू 179, तो ये बहुत अच्छा ट्रेड होता है हमारे लिए। उसके बाद फॉलोअप कैंडल्स देखिए, फिर नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे बुल बार बियर बार ऐसे बन रहे हैं। तो मार्केट ये जैसे बार फॉर्म हो रहा है, हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे हम बाय कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे कर सकते हैं। तो बहुत सारे एंट्रीज है हमारे लिए। फिर हम इसे होल्ड करके, ऐसा मैंने बताया, ये हमारे लिए ब्रेकआउट पॉइंट है। ये जो स्ट्रॉन्ग बियर बार्स बने हैं, उसके बाद हम यहाँ पे कहीं 50% प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। फिर रिमेनिंग क्वांटिटी होल्ड करके, जैसे मार्केट इसके नीचे जा रहा है, यहाँ पे कहीं पे हम एग्जिट कर सकते हैं। फिर अभी हम यहाँ पे कॉल भी बाय कर सकते हैं। ये हमारे लिए एक रीज़नेबल बाय था। तो हम निफ्टी 1900 का 19,400 का सी देख लेते हैं। 19,400, तो ये हमारे लिए रीज़नेबल बाय था। 91 टू 146, देखिए 50 पॉइंट्स बहुत है, मोर देन 50% प्रॉफिट। तो जैसा मैंने बताया, आपकी क्वांटिटी मैटर करती है। ओके, तो अब आज का चार्ट देख लेते हैं कि आज क्या हो सकता है। देखिए मार्केट बियर ट्रेंड में, हमें पता है, हमें देखना है कि क्या मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेता है। यहाँ से अगर मार्केट सपोर्ट लेता है तो फिर चांसेस ये है कि मार्केट मूड अप डाउन, तो उसके बाद मार्केट ट्रेडिंग रेंज में जाए। यहाँ से अगर यहाँ से इसको ब्रेक करता है तो चांसेस ये भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ से फिर मेजर मूव के लिए जाए, फिर हमें स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ भी देखने को मिल सकता है। अगर हम निफ्टी बैंक देखते हैं तो देखिए ट्रेंड को हमें एज ए चैनल की तरह देखना है। तो अगर यहाँ पे मान लीजिए कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती भी है, तब भी यहाँ पे इमीडिएटली आपको बाय नहीं करना है। ये भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ से कोई, हमें देखना है क्या यहाँ से कोई चैनल बना रहा है, और उसके अकॉर्डिंगली हमें ट्रेड करना है। यहाँ से अगर मान लीजिए यहाँ पे कहीं ओपन होता और यहाँ से कहीं से सपोर्ट लेता, तो मैं यहाँ पे बाय करने के लिए सोचता, क्योंकि यहाँ से स्ट्रॉन्ग रैली हुई थी। चांस ये है कि यहाँ सपोर्ट लेने के बाद मार्केट रैली करे। अभी मार्केट यहाँ ओपन हुआ है, यहाँ से रेजिस्टेंस भी ले सकता है। दीज आर द ऑड्स। तो ये अगर मान लीजिए अगर ये ट्रेडिंग रेंज है, तो ये फर्स्ट लेग पुल बैक, सेकंड लेग ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पे मार्केट ट्रेडिंग रेंज में जा सकता है। तो यहाँ पे कहीं पे भी अभी फ़िलहाल इमीडिएटली क्लियर ट्रेंड मिलना मुश्किल है। तो या तो कोई यहाँ पे आप ब्रेकआउट मोड पैटर्न के लिए वेट कर लो, या फिर कोई डिसेंट डबल बॉटम के लिए वेट कर लो, या कोई वेज के लिए, और उसके बाद फिर बाय या सेल करने के लिए हम सोच सकते हैं। तो भी यहाँ पे इमीडिएट एंट्री हमारी कोई बन नहीं रही है। तो दैट्स ऑल वी हैव। बाय।